Hello, hello. Are we live, my friends? Hello, hello. Hello. Hello, hello. Okay. इसको कम करने दो. कम कैसे करते हैं? इसको कम करेंगे हम. इसको कम करके. Okay. Hello. 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 Okay. So this looks cool. This audio looks cool. बल्कि मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ. अभी ज़्यादा ही है. Of my belief. Okay. So I guess this should be fine. Yeah. तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे वी आर हाँ, तो जहाँ पे हम लोग बेसिकली when last time we were here, we were basically doing starting with the CRUD operations, और हमारा लास्ट में डेटाबेस का कुछ तो लफड़ा हो गया था, but now our database is fully up and running. तो let's quickly अरे यार, अब क्या हो गया इसे? ओके. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पी एन पी एक्स डी बी पुश. So this will push our database. Right. I guess it should be fine now. तो थोड़ा थोड़ा इश्यूज आ रहा था लास्ट टाइम, बट आई बिलीव दिस टाइम. प्रिज्मा लिखना भूल गए थे, लॉल. Anyhow, we were doing CRUD operations. We starting with the CRUD operations basically. तो हम पहले हमने क्या किया, हम what I remember is कि यहाँ पे आके हमने अपना पोर्टफोलियो बना लिया. अब यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन ऐड करना है, राइट? तो we are doing that, and so let it load, right? So we can start basically little coding. तो हम थे एक्स सर्वर एक्शंस में, पोर्टफोलियो में, राइट? एंड देन वी वर इनटू ट्रांजैक्शंस. तो बेसिकली हमें यहाँ पे यूजर ईमेल मिल रहा है. अब हमें बस इसे ट्रांजैक्शंस का डेटा ऐड करना है फ्रॉम आवर व्हाट यू कॉल create new page. Right, this is our page, and from here we are going to push the data to database. That was the idea, I guess. So
सेट ट्रांजैक्शंस में मैंने ये सारा डेटा फॉरवर्ड कर दिया। ओके नहीं, यस। तो सेट ट्रांजैक्शन से बेसिकली हम यहाँ पे यूजर स्टेट, बेसिकली स्टेट मैनेज यूज स्टेट यूज कर रहे थे टू कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द मैनेजमेंट of all the transactions, right? And on save portfolio, you are going to create a portfolio, right? Yes. So पहले पोर्टफोलियो बनाने से पहले we'll create a transact we'll create all the transactions, right? So for transactions for each, and this would be an async function. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस को हम डेटाबेस में पुश करेंगे। ये क्लोज कर देता हूं मैं। इसको कॉपी करेंगे। राइट, तो पहले हमें सारे ट्रांजैक्शंस बनाने होंगे फॉर ईच में जाके, एंड देन विल कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस आईडी जो भी हमें रिटर्न होंगी, एंड देन वी आर गोना कनेक्ट देम विद आवर डेटाबेस, आवर पोर्टफोलियो बेसिकली, राइट? तो एक सेकेंड दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। अगर हम रुको दोस्तों, थोड़ा रिसर्च करते हैं।
हम ये कर सकते हैं, create a single record and multiple user nested create query, user nested create many query, create supports the one user to post कैटेगरी। तो बेसिकली उसने यूजर में क्रिएट डाला, उसमें डेटा डाल दिया, ये यूजर का है, ये पोस्ट है, और उसमें क्रिएट का डाल दिया, ठीक है। और क्रिएट मैनी करके क्या, तो हम ये यूज कर लेंगे ना, सारा लफड़ा ही खत्म, एक ही रिक्वेस्ट भेजेंगे, सब कुछ बन जाएगा उससे। तो transaction will not be required anymore and it would be just create portfolio, right? तो यहां से हम इसे डिलीट करेंगे, पहले पोर्टफोलियो में जाके वेट क्रिएट पोर्टफोलियो, डिकोडेड पोर्टफोलियो नेम भेजेंगे, यहाँ से कॉमा डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भेजेंगे हम ट्रांजैक्शंस, राइट। और पोर्टफोलियो में आके हम इसे करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और इसे कॉमा करके यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट, ठीक है। इसको करेंगे ये, इसमें जाएंगे, इसमें आएंगे, यहाँ आएंगे, डेबिट T1 12 15 C1 add credit T2 23, इसकी भी तो 15 ही थी शायद, C2 add, हाँ ओके सॉरी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट्स सी। यहाँ पे आए हम, पोर्टफोलियो नेम में सर्वर आया, पोर्टफोलियो नेम सर्वर, ओके ASD हमारे एटलीस्ट पोर्टफोलियो का नेम सही आ गया, बट ट्रांजेक्शन्स आर कमिंग अनडिफाइंड, द रीजन बीइंग ये सेव नहीं किया मैंने। एंड नाउ if I click on save, I get an array of transactions, right? Cool, which is cool, right? Now what I can do is transactions, right? Schema.prisma में जाएंगे हम, ट्रांजेक्शन में क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट का तो कुछ सीन ही नहीं है ना। ट्रांजेक्शन नेम में ट्रांजेक्शन नेम मिल गया, टाइप में टाइप मिल गया, अमाउंट मिल गया, कमेंट्स मिल गए, डेट मिल गया, पोर्टफोलियो आईडी और पोर्टफोलियो तो उससे ही हो जाएगा, तो इट्स काइंड ऑफ सॉर्टेड, राइट, कूल, है ना। नाउ प्रिज्मा क्लाइंट नो रिक्वेस्ट एरर, इनवैलिड पोर्टफोलियो क्रिएट, पॉइंट की करो ना, हाँ, बिकॉज हमने उसमें वो नहीं डाला था, राइट। तो इसमें डालेंगे टेम्प नेम को फिलहाल तो यहाँ से डिलीट करेंगे, कॉन्स्ट यूजर ईमेल से हमें यूजर ईमेल मिल जाएगा, कॉन्स्ट पोर्टफोलियो से ये मिल जाएगा हमें, क्रिएट डेटा ओनर ईमेल में ये मिल जाएगा, पोर्टफोलियो नेम में हम पोर्टफोलियो नेम डाल देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और हम जाएंगे अब डॉक्यूमेंटेशन में, क्रिएट मैनी, यहाँ पे आके क्या, यहाँ पे आके क्रिएट मैनी का था ना, से तो कनेक्ट हो गया ना, create many data would be an array, yes, so post would be our transactions, right, and it would be an array of
create many, इसको क्लोज कर देंगे लगे हाथों और इसमें डाल देंगे हम डेटा। और कुछ तो मैंने कर दिया, अच्छा इसको भी तो उसमें बंद करेंगे, डेटा में डाल देंगे हम ट्रांजैक्शंस। करेक्ट, डज दैट मेक सेंस? एंड व्हाट एरर आर वी गेटिंग इज कि यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो सबसे पहले वी विल सी, क्योंकि द थिंग इज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माय व्हेन माय यूजर बेसिकली कम्स फर्स्ट, राइट? तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, करेक्ट, मेक सेंस? तो दैट बिकॉज ऑफ दैट that is happening, but for now what I can do is I can do a add record, email डाल सकता हूँ मैं, save one change, अच्छा प्लस में आके पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन, हो जाए भाई सेव। क्या एरर आ गया? ठीक है, तो अभी if I'm not wrong, if I click on save, something should happen. Argument date is missing, of course, no problem. Which date is missing? Okay, let me see. उधर स्कीमा का डिफरेंस हो रहा था, राइट? वी जस्ट ऑब्जर्व्ड दैट। कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, created date, yes, so here it is date और यहाँ पे it is okay, the date is missing basically. डेट क्यों नहीं आ रही? हम ट्रांजैक्शन डेट है वो, राइट? तो इसको वैसे भी मुझे ट्रांजैक्शन डेट कर देना चाहिए। तो बेसिकली अमाउंट, comments, transaction date, transaction name, type, amount, comments. Cool. So I really hope this works. ओके, मेरे को डेटाबेस भी तो वो करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, हमें करना होगा db push this because we made a change here, so we should be off that, right? We should have things in sync. And once this and then if we do this, come here, we refresh,
never mind. खुल wait, now we have a user here, and now, if I'm not wrong. Oh, मैंने सर्वर ही बंद कर दिया अपना, मैंने गलत टैब बेसिकली बंद कर दिया. But anyhow, yes, this is up and running. Okay, and for transaction, it should be transaction date. Makes sense. Feedback को खुला लो. Cool. User में हमारे पास ये आ गया. Very good. Let's see if this works. माशुकाना उफ तेरा ये मुस्कुराना. अरे यार ये डी क्या भाई यार. Meanwhile, let's put some data here. C1 into first of July, C1 plus credit E2 2 3. Let that be blank. Yes, sir. Do it fast. Oh, hello there. Who has come to the chat? Say hi, bro. Can you hear me, bro? Say hi. All right. So I guess this should work now. Okay, why again? क्यों भाई अब क्यों फट रहा है ये? बीबी कैपिटल है. Just refresh it.
and no dudes. बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार इस सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में. बट एनी हाउ, small thing, I mean small obstacle. Once we clear it, we should be able to quickly progress through rest of the uh, application, right? So anyway, let's start with it. Moment of truth. क्यों भाई? Expected int provided string makes sense. Data transactions. तो create many नहीं करके, let's do a thing. Let's do a create here. I mean, I don't know. Let's see. Data create और यहाँ पे transactions. I don't know. I'm just testing this theory. Transaction. Create में start taking transaction. और यहाँ पे can put everything just like that. Can do parse in transaction dot amount. For the rest, we can just restructure the transaction. नहीं हो रहा क्या?
और क्या क्या स्कीमा में ट्रांजैक्शन नेम हो गया, टाइप अमाउंट हो गया, डेट हो गया, कमेंट्स, बस दैट्स प्रीटी मच इट। मेक सेंस, बट मैं अब उसे कैसे कहूँ? लॉन्ग इनम्स, नो, बट हाउ डू आई? हाँ ड्यूड। ओ, DRCR है, शीश। अक्के पर छाई ये सावन, जानम ले जाए। Let's go, boys. And if I refresh this, I should be able to see something. बोले जो कोयल भागों में. All right. So we got ID, created date, updated date. Everything seems good. Right. Comments null. Makes sense. And then those are linked to some portfolio जिसका portfolio ID है और portfolio ID यहाँ है. पोर्टफोलियो में भी हमें सब कुछ मिल गया और उन्हें ईमेल भी मिल गया. दैट इज प्रीटी गुड एक्चुअली. So this is what we were trying to do past these days and past 2 days, today and today yesterday. And huh. So I logged portfolio as well. So what did I get? पोर्टफोलियो सर्वर में पोर्टफोलियो मिला और मैं यहाँ से पोर्टफोलियो की आईडी रिटर्न कर दूं. आपके पर है ये सावन, जानना मेरे ले जाए. Right. And let's put it in a try catch block.
if there is some error, log the error, है ना, and if we get I don't know, dude, got the data. So if portfolio.id return, क्या करेंगे, क्या रिटर्न करना चाहिए दोस्तों हमें, डेटा में portfolio.id, right, and return search, डेटा में error, correct, makes sense to me, और इसको कर देते हैं डिलीट, और ये हमारा हो गया क्रिएट पोर्टफोलियो। तो हमारे CRUD ऑपरेशंस का सी कंप्लीट हो गया, एंड विद दिस वी आर गोना डिलीट द ट्रांजैक्शंस बिकॉज वी डोंट नीड दैट। हमारा एक ही जगह सारा चीजें सॉर्ट हो गया ना। यहाँ पे हमने ये डाल दिया है, यहाँ पे हमने ये सब कर दिया है, राइट, एंड नाउ if portfolio dot portfolio dot data, that means it is success, else it means it was a failure, right। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, फट से हम डालेंगे यहाँ पे एक टोस्ट का उठा के हम लाएंगे टोस्ट, हाँ, something like this, pnpm server close paste enter, आपके पैसा ये सावन चाहे न मेरी हो जाए, या फिर टोस्ट रहने दें, अलर्ट दिखा दें, सिंपल। बहुत बसर है ना, ये कैसे लेके आएंगे, अच्छा टोस्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, हाँ दैट इज ऑल्सो डुएबल। इसका कोड कैसे लिखा, अच्छा इसके वेरिएंट्स क्या है, रुको, अगर टोस्ट के अच्छे वेरिएंट्स हुए तो विल यूज इट, एल्स नहीं। डिफॉल्ट है और डिस्ट्रक्टिव है, दो ही है यार, सक्सेस वाला नहीं है। क्या बोलते हो दोस्तों, करना है, एक बार करके देखते हैं। तो अच्छा ये तो टोस्ट सेक्शन है ना, ये हमें करना ही नहीं है कुछ, लेट्स सी, इसको डाल देते हैं यहाँ पे ना, और इसको उठा लेते हैं,
साई सावन चांदन मिले जाए बोली चुप आंखों में यहाँ पे यहाँ पे we don't need any action और डिलीट कर देंगे वेरिएंट भी डिलीट कर देंगे टाइटल पोर्टफोलियो created I don't know your portfolio is created successfully something on there please try again let's see this should fail technically wow failed to fetch से क्या मतलब है तुम्हारा भाई oh server is not open भोले जो कोयल पाक में तो क्या लगता है दोस्तों since we already have data yeah I need to put a little more specific I mean थोड़े से errors I need to be active I mean the duplicate one I need to tell for sure आपके पास है सावन चांदन में वो अभी आ जाएगा डुप्लीकेट वाला तो वो अभी के अभी वो कर देंगे हम फर्स्ट जुलाई को हुआ था ठीक है याद रखना दोस्तों भाई okay let's quickly see debit transaction T1 1 2 1st July C1 add credit T2 2 3 2nd July nothing add save and this should break yes unique constraint failed not available code is P20022222222. But how do I mean this is like the whole error right ये मेरा पूरा error है I don't know let's see error code I don't know let's see what happens now ओ भाई okay P2002 if I'm not wrong let me quickly go here हाँ चलो तो I can simply do
listen to me. What I can do is, if error dot code is equals to what I just copied, return data, return data dot portfolio ID data is unique error. Let's make it a, instead of data, let's make both the data as message, है ना? Else just return message message as error, right? And if we come here, if portfolio dot data नहीं, message है ना, if portfolio dot message is equals to error, just do this, है ना? Else if portfolio dot message is equals to unique, do the same thing. This transaction already exists in one of your another portfolio. Please try changing. या बट ये नॉट अवेलेबल, अगर मेरे को यहाँ पे वो मिल जाता ना, a unique thing errors, so it would have been fun. Anyhow, in one of your another portfolio, please try changing the transaction details, right? And then a simple else status, your portfolio is successfully created. And if I go here, I will try to save, be able to see something. आपके पास ये सावन जानन मिले. Okay, let me show you. हाँ बट रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी? अरे रिस्पॉन्स काहे नहीं आ रहा है पे? लॉग portfolio and I please don't. Oh, unique error. जानन मिले जाए.
टोस्ट क्यों नहीं आ रहा है अब? भाई टोस्ट क्यों नहीं आ रहा है? So toast is not something that is gonna work. ओ भाई चार्ट्स भी आ गए, वेरी गुड. Oh, could it be because of this line? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? Okay, just let me go to the layout.js. कहाँ पे? कहाँ पे? बॉडी में. So hopefully now maybe. हाँ, cool. Transaction. Okay. And if I, okay, reactions is like something we'll need to do later, but for now, this is looking great, ain't it, friends? And if I just, just let me just refresh it. Rabbit T3, edit C3, add, save. Why? Why? Okay, because I believe the what you call this portfolio already exists, right? I am portfolio आईडी से जुड़े हैं ना, because I do save here. Give me a yes, it's successfully created, and then I reroute it to dashboard. Router use कर रहे हैं क्या? Add another. Import use router from next navigation. Const router
इज इक्वल्स टू यूज राउटर, राउटर को लेके हम आ जाएंगे यहाँ पे राउटर डॉट पुश डैश पोर्ट एंड if I am not okay the whole thing but anyway okay अगर वो हो ही गया तो can just do this and I can add something here not this जाने में गिर जाए ये क्या लॉग हो रहा है भाई इस चेंजिंग कंट्रोल इनपुट हाँ यार ये भी देखना था ये भी देखना था ये भी देखना था ये देखेंगे it's some other day but for now I believe we are pretty good to go. All right, my friends. So I believe this is a great job for today. We did the create what you call CRUD का C part हो गया, which is really great. Let's just commit it. Our whole of the our progress. ये this thing I got to learn today. This was something great. Uh, yes, great job. And या टुमारो अभी क्या हो गया अपना डेटाबेस बन बेसिकली वो हो गया वो बन गया राइट एक पोर्टफोलियो बन गया एंड सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू रीड एंड पुट हियर तो वो भी करेंगे एंड यस ऑफ कोर्स यहाँ पे वैलिडेशन डालना है वो डालेंगे यहाँ पे एक्शंस करना है वो सब करना है तो देयर इज अ लॉट टू डू बट वी basically conquered our first big huge obstacle so that is really great yeah and so from next time the progress will be faster तो देखना जरूर आना बाकी let's quickly commit changes uh, adding toaster for notifications commit portfolio server action commit create new UI in line with uh, create new UI in line with server action commit नहीं इसे अनस्टेज करेंगे हम क्लोज ऑल करेंगे इसे बंद करेंगे इसे बंद करेंगे और माइग्रेशंस को करेंगे डिलीट pn pm prisma db माइग्रेट ऐसे ही तो होता है कैसे होता है que para sair dando no meio माइग्रेट नहीं माइग्रेट नहीं हाँ माइग्रेट नहीं माइग्रेट ही था क्या होता है काइंड ऑफ कंफ्यूज
pnpx हाँ first migration or maybe just put in it आपके बरस है ये सावन चांदन में जाए विल कमेंट दिस सो दोस्तों फिर आज की स्ट्रीम को यहीं तक रखते हैं आई होप यू एंजॉयड इट एंजॉयड क्या मतलब आपको कुछ सीखने को मिला हो राइट आपको देखने को मिला हो सीखने को मिला हो तो लाइक करें वीडियो को आई मीन आपके लिए तो वीडियो ही होगा अब स्ट्रीम क्या एंड टू द गाय हु वाज वाचिंग इट साइलेंटली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मिलते हैं कल वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर we'll do the read operation and edit the actions in that table create new में यहाँ पे actions वाली चीज को figure out करेंगे ठीक है दोस्तों चलो देन बाय राधे राधे